वेलकम एक ऑफ यू। मैं आपका दोस्त कीर्ति भोला फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके चाहिए प्रोग्राम डिजिटल मार्केटिंग में। सो यस डियर, वो जस्ट अभी घड़ी आ गई डियर जहां अभी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग इस कोर्स का एंड करने वाले हैं डियर। So right now we are at the stage where exactly we're just going to complete our digital marketing course, and I'm sure, my friend, thanks a lot, my dear all. Thanks for just being with me all. Thanks for being with me here. And आपने इनफैक्ट आई जस्ट सीन योर सीरियसली माय फ्रेंड, इनफैक्ट हर एक वीडियो में इनफैक्ट आई हैव जस्ट गॉट अ लॉट ऑफ comments. In fact, I just gone, in fact I have just received a lot of emails, my friend, how the way that I'm just building, किस तरह से इनफैक्ट मेरे यहाँ पर वीडियोज बने हुए हैं, इनफैक्ट कौन से टॉपिक में इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल इनफैक्ट दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ऑन इट, राइट? एंड लॉट ऑफ थिंग, लॉट्स ऑफ लव इनफैक्ट इज जस्ट गॉट फ्रॉम योर ऑल माय फ्रेंड्स. So thanks a lot for you for that. And yes, my friend, as I said, today we are just going to finish our digital marketing course. So यहाँ पर this is actually, the course is just to not or just, my friend, but that is actually going to make or to build your career, my friend. Now it's you can create the opportunities by working at home even, right? So now you can start your own business, my friend. You can have your own card, you can have your own business, you can start earning. That is up to you, my friend, where and how much you want to earn. So yes, my friend, so today's video, let me complete. Afterwards again we'll have just talk about how can you start your business as a digital marketer. So again, my friend, let me take you to the last session, that is not with the Google Analytics. So right, how can you plug in your Google Analytics with your WordPress account? So that for which actually we are just going to build up a video, my friends, right? So let me take you to the journey, my friend. As I said, right, let me take you to the WordPress account. Well, I'll just show you, right, how can you add Google Analytics in your WordPress. So this is nothing but, my friend, that is the WordPress account exactly we are into right now. At the panel that you can see here at the left side, that is plugin. We have in plugin, we have just gone through add new, right? Add new, we have pressed in add new. You can see here keywords. So now I just pressed only, I actually written monster. So yes, monster inside it is, right? Monster inside, that is Google Analytics board, right? So now we'll have to actually activate this, my friends, right? So I pressed on that. So this is monster inside my different Google Analytical dashboard, right? So yes, we are just going to talk about that only there. So kindly just go through it. So that account actually we are just going to activate here. So we'll have to install. ओके डियर, सो एक्चुअली वो ऑलरेडी इंस्टॉल था मॉन्स्टर इनसाइड, राइट, हमारे वर्डप्रेस का एग्जैक्टली. तो मैंने एक्चुअली उसे डीएक्टिवेट किया, डिलीट किया, राइट? सो नाउ इट्स अगेन टाइम, माय फ्रेंड, दैट अगेन आई जस्ट इंस्टॉल इट, राइट, जस्ट फॉर यू, माय फ्रेंड, जस्ट टू शो यू दैट हाउ इट वर्क्स एंड ऑल. सो उसे इंस्टॉल करने के इनफैक्ट प्रोसेस क्या है एंड हाउ इट विल गोना टू फंक्शन. सो आई जस्ट इंस्टॉल नाउ हियर, राइट, मॉन्स्टर इनसाइड, दैट इज गूगल एनालिटिक्स टूल, माय फ्रेंड्स. इसे अभी हम लोग एक्टिवेट करेंगे डियर. So now you just can see here, welcome to the monster insight, getting started. So launch with the wizards. Now you just can see what is business website, publisher or e-commerce. So we'll just select publisher, 7, continue. Right, connect with monster insight. So now they are asking us to connect. Choose an account to continue the monster insight. So that we have here mind mastery. Okay, so now allow Sideways, complete the connection, finalizing authentication, right? So now it is finalized here. Authentication हो गया यहाँ पे. So now we can, now in onwards, my dear friends, हमारी वेबसाइट जो भी इनफैक्ट हम लोग जो बिल्ड की थी अब वो किस तरह से इनफैक्ट परफॉर्म करेगी. सो नाउ दैट वी कैन ईजिली वी कैन एनालाइज. हम लोग यहाँ पर उसके इनफैक्ट ईच एंड एवरीथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट, रिपोर्टिंग सिस्टम दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस नाउ
कि कौन से लोग इनफैक्ट हमें यहाँ पे, कौन से लोगों को इनफैक्ट हम लोग यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं. यहाँ पर जस्ट देखिए डाउनलोड ट्रैकिंग एंड ऑल. यहाँ पर ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन इट इज गिवन डियर. अनदर लिंक पर इट वी हैव 7 कंटिन्यू कर देंगे यहाँ पे डियर, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे प्लग इन ऑलरेडी जस्ट किया था डियर. सो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हम लोग ने सेट करके रखी हुई है. सो नाउ जस्ट कंटिन्यू विद दिस, चेकिंग योर वेबसाइट. ओके, जस्ट अभी चेक हो रहा है. अपग्रेड ओके साथ राइट, upgrade to complete monster experience. So now it is done dear. Get started, right? The most powerful WordPress analytical without high cost. No worry, यहाँ पे in fact इसकी cost यहाँ पे it is mentioned here for plus, for pro and for agency, so that you can plan. If you just want to see the review, read Monster Insight user review to see why over 3 million professionals use Monster Insight to grow the business with confidence. Set up universal website tracking with just few clicks. Next, one click Google Analytics enhance e-commerce tracking. Great. Tracking के लिए in fact ये just use करते हैं right, e-commerce company. Analytics report right inside your WordPress dashboard. Analytics report in fact that you can expect with the help of this. Get started with the Monster Insight. Go start it, right? So now you can just buy the plan and as such you can plan my defense. Otherwise almost things are done here. जैसे in fact हम लोग यहाँ पर पेमेंट हम लोग कर देंगे यहाँ पे. So right, your Monster Insight that will just get started here. So this is nothing but the way, my defense, that how can you do that, right? How can you start the Google Analytics on your website here, that how your website is performing and all. To let you know my friend in depth, right? So I just would like to take you. In fact, abhi just your process is done my friend on Monster, right? अपने Monster Insight जो है directly that you can just see here. यहाँ पर अब मैं exit setup कर लेता हूँ. So it is already done, right? अब हम लोग यहाँ पे I'll just show you here. मैं आपको यहाँ पर just दिखाना चाहता हूँ Google Analytics. बिकॉज ऑलरेडी हमारी वेबसाइट एंड हमारी जीमेल आईडी राइट, इट इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड. सो यहाँ पे दैट विल जस्ट शो अस द रिजल्ट माय फ्रेंड्स. सो दैट आई जस्ट वुड लाइक टू टेक यू हियर. आई वुड लाइक टू शो यू हियर. यहाँ पे देखिए बिजनेस एनालिटिक्स, ये ऑलरेडी साइड बिज दैट यू नो नाउ वेरी वेल राइट देयर. नाउ वी जस्ट कनेक्टेड विद दिस. सो ऑल अकाउंट विद दिस. यहाँ पर इनफैक्ट हमारे जो अकाउंट्स है दैट यू कैन जस्ट सी प्रॉपर्टीज एप्स एंड ऑल राइट. एट दिस मोमेंट हम लोग ने इसको स्टार्ट अब तक नहीं किया है. सो राइट, सो हमें जो भी इनफैक्ट यहाँ पर जो डेटा जो मिल रहा है दैट इज एक्चुअली रिलेवेंट विद अवर वेबसाइट. जो भी इनफैक्ट हम लोग ने यहाँ पे वर्कआउट जो किया है डियर, सो दैट विल यू कैन सी हियर विजिट प्लेटफॉर्म होम. तब तक इनफैक्ट हम लोग दूसरी साइड इनफैक्ट यहाँ पर जस्ट कवर करने की कोशिश करते हैं डियर. टैग मैनेजर यहाँ पे देखिए, ऑप्टिमाइज डेटा स्टूडियो, यू कैन सी सर्वे. बट यहाँ पर इनफैक्ट माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने अब तक इसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया है. ये एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म देखिए, जब इनफैक्ट गूगल एड्स के साथ इनफैक्ट अकाउंट्स इन गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, गूगल एड इनफैक्ट जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म थे दैट हाउ इट परफॉर्म राइट, जहाँ से इनफैक्ट उसको जो भी रिजल्ट रहता है तो दैट यू कैन ईजिली आप एनालाइज कर सकते हो डियर. यू कैन फाइंड द रिपोर्ट, यू कैन आस्क फॉर द रिपोर्ट माय फ्रेंड अबाउट द गूगल एड इंटीग्रेटेड सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंटली विजिटेड. सो ऑल दैट प्लेटफॉर्म दैट यू कैन यूज डियर. यहाँ पर इतने सारे टूल्स हैं. So now I just would like to show you my friends. Along with this, now I just would like to show you. This is only just extra information I'm just giving you here. This is not a part of our video, but still I'm just showing just cause आपको जानना ज़रूरी है. Now I'll just take you to the. Wait. Still we have few information to give it here. So now you just can see here, as I told you my friend just recently that you know very well, because with the just in fact digital marketing and video that we have started the same day. In fact we have just started working on this. हम लोग ने साइड बेस की इनफैक्ट हम लोग ने वेबसाइट डिज़ाइन की एंड एवरीथिंग. सो नाउ यू कैन जस्ट सी हियर कितने यूजर्स, न्यू यूजर्स राइट, एवरीथिंग, एडमिन टाइम इनफैक्ट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू, व्हाट यू जनरेटेड यूजर्स लास्ट 30 मिनट्स,
इन फैक्ट दैट यू कैन आस्क फॉर राइट नो, जिस इन फैक्ट आप यहाँ पर स्टार्ट हो जाओगे, कितने यूजर्स कितने टाइम में कितने मंथ में, राइट, व्हाट यू गॉट, सो ऑल दैट राइट रिपोर्ट दैट यू कैन एक्सपेक्ट हियर, राइट. सो ये जस्ट इन फैक्ट ये टोटल ये देखिए लास्ट 7 days, या फिर अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी थोड़ा अगर पुराना अगर ज़्यादा है, सो यू कैन मेंशन दैट ऑल्सो दैट पीरियड. सो आप उनका टोटली क्या इनफैक्ट उस पर रिव्यूज़ हैं या फिर इसमें कितने विजिटर्स हैं, सो दैट यू कैन सी हियर, राइट हियर. So yeah, totally report that you can see, expect, get started with the Google Analytics 4. Continue setting up your property you can set here. So that how that I'll just tell you here. Go to the setup assistant access account, take courses on, okay, you can learn about analytics here, right. तो guide is already given here. So आपको उसको अगर आपको समझना है, so you can visit the site, right, and just go through the link here. Continue setting up the property. So ये देखिए, go to the setup analyst, यहाँ पे देखिए setup assistant is already given my friends, property setting is given. So यहाँ पर already आपको link दी गई है setup assistant. This set up the features to get most out of your new property, right. Your smarter, more advanced data analysis awaits. Learn more about the Google Analytics for properties. डेटा कलेक्शन, राइट, जो डेटा इनफैक्ट आपको जो कलेक्ट होता है वेबसाइट के थ्रू या फिर इनफैक्ट जो भी अदर को सोर्सेज के थ्रू जो भी लोग आपके वेबसाइट पर आते हैं, सो ऑल दैट डेटा यू कैन इजीली कलेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी, राइट. सो कलेक्ट वेबसाइट एंड ऐप डेटा. देन प्रॉपर्टी सेटिंग्स हियर, द टर्न ऑन द Google signals, right, the setup the conversions, define setup conversions, define audience, manage users. यहाँ पे जैसे आप देखिए dear, turn on the Google signals, what signal that you get, right, to run your website. और यहाँ पे इनफैक्ट आपको जो कुछ भी what are the plugin that you get or the third party, so all that might have in fact how that you're working, how you're integrating and all, so that you get from your set up the conversions, set up conversion, what business that you convert here, you get conversion from which आपको exactly जो भी data है, जो भी traffic है, आपको कहाँ से आ रहा है, conversion किस तरह से बढ़ता जा रहा है. So all that movement activities that you can easily measure here. The define audience, आपको ऑडियंस की इनफैक्ट आपको डेमोग्राफिक क्या है, इनफैक्ट उनकी जेंडर क्या है, राइट. मोबाइल से इनफैक्ट यूजर्स इनफैक्ट जो है मोबाइल यूज़र कितने हैं इनफैक्ट का, या फिर आपके ऑफिशियल तो दैट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, बट द थिंग आपको कौन सी एज का भी इनफैक्ट इफ यू वांट दैट डेटा, सो दैट ऑल्सो यू कैन बेटर, सो यू कैन डिफाइन ऑडियंस इन डेप्थ, राइट. सो दैट ऑल्सो कैन बी डन, जिसके अंदर इनफैक्ट आप जेंडर वाइज में इनफैक्ट यू कैन नो वॉट एज विथ विच वॉट एज, राइट, with what actually priority. So all that thing that you can get here. The next, manage users. So usually you might have found that no, you can manage the groups, users in a group, might have found. So right, so Google Ads, link Google Ads, bid, GA4 conversion, target edit for ads to GA4 audience here. So this settings all you get here, right? That is to set up the assistant. In property setting, might have found that you get what here, just see this property name, industry, category, right. So what category that you expect, so what type of industry it is. So we are into internet and telecom, right. The next, not telecom exactly, let me see my reference, online communities, real estate, shopping, online communities, chalo theek hai, no worry, we are online communities here. Report time zone, so that is actually depend upon the country that you select, right. So as we stay in India, so you can choose that there, say this, right. So ultimately that will come India time, right. The currency displayed, that is US dollar or rupee, so that you will have to INR, so that I will choose there. Yes, Indian rupee, right. So that also we have done now. Property access management and all, right. So that also you can do here. So that all filters are given, my friend. Property access, no worry, यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है हमें. Data streams, in fact yes, data के लिए in fact it is important here. All iOS, Android web, आपको data exactly कहाँ से आया हुआ है, so all that information is there, right. सो डेटा इनफैक्ट आप इंपोर्ट कर सकते हो, डेटा के रिलेटेड इनफैक्ट जो सेटिंग्स हैं, अगर वो अगर आप जस्ट चेक करना चाहते हो, डेटा कलेक्शन, डेटा रिटेंशन, कहाँ से डेटा इनफैक्ट कलेक्ट करना है, अगर आपने टोटली सारा डेटा अगर आपका गूगल पे है तो, राइट. सो दैट ऑल पॉलिसीज दैट यू कैन रीड माय फ्रेंड, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन प्रोसीड, राइट. सो दिस इज एक्चुअली एडमिन पार्ट, राइट, दैट आई जस्ट टोल्ड यू देयर. अकाउंट सेटिंग, अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट, ऑल फिल्टर्स दैट यू गेट देयर, राइट. फिल्टर्स में नाउ आई वुड सजेस्ट यू, फिल्टर्स में इनफैक्ट आपको क्या क्या आता है डेटा वाइज, इनफैक्ट आपको जो ट्रैफिक या फिर आप जस्ट सिलेक्ट आपको फर्स्ट नेम है, टाइप क्या होगा, व्यूज़ हो क्या है. सो यस, यू कैन सेट योर फिल्टर,
that I already told you dear. We'll just talk about dear report. अब हम लोग बात करने वाले हैं रिपोर्ट के बारे में. सो रियल टाइम में लेट मी टेल माय फ्रेंड्स, रियल टाइम के अंदर इनफैक्ट आपने कौन से इवेंट यहाँ पर जस्ट किए हुए हैं. यहाँ पर देखिए एज आई टोल्ड यू डियर, प्लीज़ डोंट माइंड, बट लेट मी टेल यू यहाँ पर आपको ज़्यादा इनफैक्ट क्या है आपको नहीं दिखेगा ओवरव्यू आपको, बिकॉज एज आई टोल्ड यू डियर कि हम लोग ने न्यूली वी हैव डिजाइन दिस राइट. हम लोग ने साथ में इन योर प्रेजेंस ओनली हैव क्रिएटेड दिस वेबसाइट एंड ऑल. सो राइट, ये जस्ट हमारे लिए अभी फिलहाल नया है, बट येस आई कैन प्रॉमिस यू इफ यू कम आफ्टर, इफ यू विजिट माई sitebase.com राइट, अवर sitebase.com आफ्टर जस्ट 6 months, then that time my friend that you can expect कि यहाँ पर डेटा जो भी रहेगा that definitely will be different. All users right add comparisons if you want, users last 30 minutes, so that data in fact if you just wanted to see right, so and which location that you're targeting, device category right, so that also you can see first user source यहाँ पर क्या है audience, then users from which source they are coming and all, what event what activity that you're doing here, event count by event name यहाँ पर क्या है, view page title screen name title यहाँ पर what exactly the page title, what pages they are, आप यहाँ पर एग्जैक्टली क्या क्या कौन से टाइप के पेजेस राइट या फिर स्क्रीन आप यहाँ पे पोस्ट कर रहे हो राइट. इनफैक्ट उसकी भी उसके एग्जैक्टली रिजल्ट क्या है, कन्वर्शन एग्जैक्टली कि कौन से इवेंट का क्या कन्वर्शंस हैं राइट. सो वो भी इनफैक्ट इवेंट के नाम क्या थे, उनके कन्वर्शंस क्या थे, यूज प्रॉपर्टी एंड यूजर्स. सो राइट दैट ऑल थिंग माय फ्रेंड इन रियल टाइम दैट राइट यू नो यू कैन, ये रिपोर्ट्स एग्जैक्टली है दैट इज जस्ट बेस्ड ऑन द रियल टाइम. अब तक का एग्जैक्टली क्या रिव्यू है राइट अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ योर वेबसाइट माय फ्रेंड, सो दैट यू कैन सी हियर ऑन रियल टाइम रिपोर्ट. द नेक्स्ट दैट इज अबाउट माय फ्रेंड्स. अब हम लोग लाइफ साइकिल के बारे में अगर बात करते हैं सो राइट, तो लाइफ साइकिल में डियर वी हैव एक्विजिशन. एक्विजिशन में देखिए डियर, एक्विजिशन में ओवरव्यू, यूजर एक्विजिशन, ट्रैफिक एक्विजिशन, मतलब आपके जो भी एक्विजिशंस हैं, एक्विजिशन का मतलब ये होता है डियर व्हेन वी अट्रैक्ट द पीपल, तो वो एग्जैक्टली वो जो भी ट्रैफिक है वो एग्जैक्टली ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है. सो राइट, यहाँ पर आपको भी जस्ट नहीं दिखेगा डियर, बट कौन से कंट्री से इनफैक्ट है, सबसे ज़्यादा यूज़र कहाँ से आए हुए हैं, सो दैट ऑल इन्फॉर्मेशन दैट यू गेट हियर राइट रियल टाइम से इनफैक्ट या व्यू यहाँ पे देखिए दैट यू कैन एक्सपेक्ट राइट कितने यूजर्स हैं, कहाँ से आए हुए हैं, क्या एज के इनफैक्ट दैट यू कैन सी. यहाँ पे देखिए सेशन गूगल एड्स के थ्रू कितने आए हुए हैं, डिफॉल्ट चैनल के थ्रू इनफैक्ट यहाँ पर कितने आए, लाइफ टाइम वैल्यू यहाँ पर क्या है इसकी राइट. सो दैट ऑल एक्विजिशन ओवरव्यू. यूज़र एक्विजिशन में अगर हम जो यहाँ पर देखते हैं डियर, सो ये देखिए इट इज़ वेरी सिमिलर. यहाँ पे देखिए यूजर्स का राइट चैनल देखिए, ग्रुप इन ग्रुप वाइज चैनल वाइज एंगेजमेंट राइट रेट एग्जैक्टली आपके यूजर्स का जो भी बात हम लोग करते हैं एंगेजमेंट क्या है, कितने नए यूजर्स आए हुए हैं, सेशंस कौन से इवेंट इनफैक्ट हम लोग ने यहाँ पर रन किए हुए हैं. सो दैट ऑल थिंग माय फ्रेंड दैट कम्स इनटू यूजर एक्विजिशन. द नेक्स्ट दैट इज ट्रैफिक एक्विजिशन. यूजर्स बाय सेशन डिफॉल्ट चैनल ग्रुप ओवर टाइम. यहाँ पर आपको फिलहाल दिस मूवमेंट आपको सारी चीज़ें इनफैक्ट आपको जीरो दिखेगी बिकॉज अब तक नहीं हुए. रेट है सेशल डिफॉल्ट चैनल्स ग्रुपिंग डेट वाइज इनफैक्ट अगर आपका अगर परफॉर्मेंस आपको देखना है तो दैट यू कैन सी डियर चैनल वाइज राइट ग्रुप वाइज. सो ऑल दैट थिंग डियर बिकॉज ट्रैफिक में वी टारगेट ओनली ग्रुप राइट. सो ग्रुप वाइज इफ यू जस्ट वांटेड टू सी राइट दैट कि हम लोग ने उनको यहाँ पर एक्वायर करने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए राइट व्हाट इवेंट वी हैव डन इनफैक्ट जेंडर वाइज डेमोग्राफिक वाइज हम लोगों ने किस तरह से इनफैक्ट उनको अट्रैक्ट किया. सो ऑल दैट डेटा दैट यू कैन एक्सपेक्ट हियर डियर. सो नाउ विल जस्ट टॉक अबाउट एंगेजमेंट. इन एंगेजमेंट हम लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं, इवेंट कन्वर्शंस, पेज क्रिएशंस राइट. सो दैट ऑल थिंग दैट कम्स इनटू द एंगेजमेंट डियर. सो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर टाइम एग्जैक्टली क्या होता है राइट, सेशंस पर यूजर क्या है एग्जैक्टली, द एंगेजमेंट टाइम पर सेशंस. सो ऑल दैट यू कैन एक्सपेक्ट डियर पर डेट वाइज इनफैक्ट आपका एंगेजमेंट कितना है. सो दैट ऑल्सो यू कैन मेजर डियर पर मिनट डेटा. ऑलरेडी जस्ट टोल्ड यू राइट द टॉप पेजेस स्क्रीन्स. सो आपके पेजेस भी इनफैक्ट यहाँ पर इवेंट जो है दैट ऑल्सो गेट काउंट बाय डियर फ्रेंड्स, इवेंट काउंट बाय इवेंट नेम राइट. सो इवेंट वाइज इनफैक्ट यहाँ पर परफॉर्मेंस डाटा जो थोड़ी ना हम लोग जो कैंपेन हम लोग जो रन करते हैं डियर, सो वो कैंपेन वाइज इनफैक्ट यू नो हम लोग ये जो कैंपेन तो हम लोग दूसरे इनफैक्ट ईमेल मार्केटिंग हम लोग फेसबुक में इनफैक्ट वहाँ पर करते हैं, बट यहाँ पर भी इनफैक्ट आपके वेबसाइट पे कितने लोग इनफैक्ट आए थे, कौन से इवेंट या कौन से ब्लॉग राइट इन द कैंपेन इनफैक्ट अगर हम लोग ने वहाँ पर कुछ रन किया है, कैंपेन तो नहीं होते बट यहाँ पर हम लोग कैंपेन नहीं बोलेंगे डियर, बट हम लोग यहाँ पे कोई ब्लॉग अगर कुछ नया इनफैक्ट एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पर कुछ एंगेज लोगों को एंगेज करने के लिए हम लोग वहाँ पर कोई अगर पोस्ट किया हुआ है, सो वहाँ पर लोगों का रिव्यूज़ क्या था, सो दैट वी गेट इन एंगेजमेंट रिव्यूज डियर.
ये एंगेजमेंट में इवेंट आते हैं, कन्वर्शंस एंड पेज क्रेन्स, सो दैट राइट, सो दैट ऑल थिंग दैट विल कम. मोनेटाइजेशन देखिए, मोनेटाइजेशन ओवरव्यू. So yes, pay per click and number of things that we have, my dear friends, options. So right, यहाँ पर वो एक्जैक्टली क्या अब तक आपने देखिए टोटल रेवेन्यू आपने कितने कमाए, ई कॉमर्स से कितने रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू कितने इनफैक्ट कमाए, डेट वाइज आपको जो बताएंगे टोटल परचेजेस क्या है, फर्स्ट टाइम परचेजेस इनफैक्ट अगर आपने कुछ किया हुआ है दैट इज कॉल्ड अबाउट ROI, राइट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. उसमें से इनफैक्ट अगर आपने कोई भी अगर कोई समझ लीजिए अगर आपने ये देखिए ई कॉमर्स परचेज बाय आइटम लिस्ट ने यहाँ पर आपने जो भी एक्टिविटीज़ की हैं, सो वो एक्टिविटीज़ के पीछे इनफैक्ट कितना इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, उनके पीछे आपने कितनी इनकम कमाई हुई है. सो दैट ऑल थिंग दैट कम, माय डियर फ्रेंड, इन मोनेटाइजेशन overview. This is actually for e-commerce, my dear friends, in app purchase and all, right. So this is actually for the people who are engaged in IT, right, the quantity, product, revenue by product, ID, product, revenue. So yes, this is actually about monetizing, my dear friends. This will show you the income against your ROI, right, your investment, income against to the investment, my friend. That will give you idea about this in monetization. In retention, what do you get, how do you engage the people, so that to get, my dear friend, in then and see here how do you retain, user retention by chart, right, engagement by cohort, किस तरह से आप उनको डियर रिटेन करो, यूजर रिटेंशंस एंगेज करने के लिए व्हाट एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग, राइट. सो दैट ऑल थिंग दैट यू गेट हियर, माय डियर फ्रेंड्स. द नेक्स्ट विल जस्ट टॉक अबाउट ये देखिए यूजर्स, इनफैक्ट यूजर किस पे डिपेंड हो गए, दैट इज डेमोग्राफिक. डेमोग्राफिक ओवरव्यू का मतलब ये है डियर, जैसे मैंने आपको बताया डेमोग्राफिक, राइट, दैट इज एज वाइज, जेंडर वाइज, उसमें जेंट्स कितने, लेडीज़ कितने, इनफैक्ट उसमें यूजर जो भी है इनफैक्ट यूजर वाइज, राइट, मोबाइल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कंट्री वाइज हैं. सो ऑल दैट डेटा माय डियर फ्रेंड दैट यू गेट हियर, राइट. जस्ट यू कैन सी हियर लास्ट 30 मिनट्स में इनफैक्ट कितने लोगों ने विजिट किया होगा, राइट. ये दैट यू कैन सी, यू कैन चेक लेटर ऑन सिटी वाइज, इनफैक्ट यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट हियर. देन यहाँ पर देखिए बाय जेंडर, एज आई सेड, राइट, जेंडर इनफैक्ट न्यू यूजर्स, रिटर्निंग यूजर्स, जेंडर वाइज इनफैक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं. बाय इंटरेस्ट, राइट, किसका इंटरेस्ट क्या था, एक्टिविटी वाइज, दैट यू विल हैव टू मेंशन. सो इंटरेस्ट वाइज, बाय एज वाइज यू कैन एक्सपेक्ट योर, उनकी एज क्या होगी, बिकॉज ऑलरेडी आई जस्ट टोल्ड यू डियर द डेमोग्राफिक. तो बाय लैंग्वेज टाइप इनफैक्ट, राइट, सो लैंग्वेज इनफैक्ट कौन सी होगी और उसमें से कौन लैंग्वेज वाइज इनफैक्ट दैट विल हेल्प यू टू कन्वर्ट योर डेटा, माय डियर फ्रेंड, दैट लैंग्वेज वाइज. सो वहाँ से इनफैक्ट आपको रिव्यूज़ मिले हुए, सो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू टू गेट दैट, राइट. सो दिस इज एक्चुअली डेमोग्राफिक डिटेल्स, demographic overview it was here, specifically user by country, right, country wise data अगर आपको यहाँ पर जो चाहिए, users wise, right, न्यू यूजर्स कितने हैं, एंगेजमेंट सेशंस क्या है, उसका रेशियो क्या था, इनफैक्ट सेशन, इनफैक्ट कन्वर्जन क्या है. सो दैट ऑल डेमोग्राफिक डेटा दैट यू गेट, माय डियर फ्रेंड्स, हियर. देन लास्ट दैट इज टेक्निकल. तो टेक्निकल ओवरव्यू इफ वी टॉक, राइट डियर. सो हियर यूजर्स प्लेटफॉर्म, कितने प्लेटफॉर्म इनफैक्ट हम लोग ने यहाँ पर उनको दिए हुए, ऑपरेटिंग सिस्टम इनफैक्ट विच वन ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS है या फिर एंड्रॉयड है, वेब है, right. So which which system, which operating system these people are using, maybe on mobile, maybe on the PC or system dear, right. Platform, device category, so that will mention. So वहाँ पर जाके impact browser, device category, screen resolution, so all this thing my friend that matters. app version कौन सा था exactly, latest app version, इनफैक्ट ये जो सारी चीज़ें हैं डियर आपको पता होगा डियर कि ये आईफोन में सबसे ज़्यादा इनफैक्ट जस्ट यूज़ होती है, बिकॉज दैट इज़ ऑल अबाउट टेक्निकल. स्क्रीन रेजोल्यूशन, ब्राउजर, डिवाइस कैटेगरी एग्जैक्टली, राइट. देन उनका वर्जन एग्जैक्टली कौन सा होता है एप्लीकेशन का, लेटेस्ट ऐप रिलीज ओवरव्यू, राइट. स्टेबिलिटी, एप्लीकेशन की स्टेबिलिटी इनफैक्ट इतनी कौन सी है, बाय डिवाइस, मॉडल इनफैक्ट कौन सा है उनका, राइट. तो ये इनफैक्ट आपने जस्ट देखा होगा कि आईफोन दैट रियली दैट टेक केयर ऑफ, राइट. इनफैक्ट यूजर्स वाइज डेटा दैट डू हैव इन कोडिंग, सो कोड वाइज दैट डू हैव अ डेटा, सो राइट. उनका ओवरव्यू इनफैक्ट उन्होंने अगर जस्ट रिलेटेड रिलीवेंट अगर हम लोग जो टास्क अगर बात करेंगे, अगर कुछ अगर कोई नया अपग्रेडेशन को अगर हम लोगों ने कुछ नया अगर वर्जन अगर हम लोग लेकर आ रहे हैं, तो अगर वो वाइज अगर इनफैक्ट दैट टेक्निकल वाइज इफ़ यू वांट एनी डेटा, सो दैट इजीली एप्पल कंपनी जो है एग्जैक्टली उनको इजीली ये डेटा मिल जाएगा, राइट. बिकॉज एक्चुअली दे हैव अ टोटली रिलीवेंट सेटअप. सो
easily they can get a report my dear friends, and just based on that only my dear friends वो लोग अपने जो भी वर्जन है वर्जन वाइज इनफैक्ट दे आर लॉन्चिंग न्यू डिवाइसेस, जो कि पुराने इनफैक्ट आपको जस्ट पता होगा डियर कि वो इनफैक्ट दे डोंट वर्क लाइक एंड्रॉयड, उसके 2G वाले इनफैक्ट दैट स्टिल दैट वर्किंग राइट। बट अभी अगर आपको पता होगा कि 5 या 4 जो इनफैक्ट जो आईफोन में इनफैक्ट आईफोन 4 करके एग्जैक्टली जो मॉडल था, सो नाउ इट इज़ नॉट वर्किंग, नो बडी इज इनफैक्ट बाइंग राइट। जो फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन दे आर एप्पल इज लॉन्चिंग द प्रोडक्ट जनरेशन वाइज डियर। सो जैसे इस वो पुराने होते जाएंगे दे आर वाइंड अप राइट, दे डू वॉट दे यूज टू वाइंड अप दैट प्रोडक्ट, और इनफैक्ट उसको सर्विसिंग भी उनके रिलेटेड जो भी इनफैक्ट जो भी वहाँ पर यूज़ होने वाले जो एप्लीकेशन जो रहेंगे वो भी इनफैक्ट यूजेस भी उनके बंद करते जा रहे हैं right, so they are upgrading themselves। So this is what, from where do you get that all the ideas my dear friends? From these reports only. Take details and all right, so details that already I just told you my dear friend that will be relevant to that. Now library, if we talk about user browser over time, so if you now in library my dear friend, if you want to learn something, if you want to get a guidance right, guidance about how to use all analytics and how that analytics that is going to guide you and how can it help you my dear friends to measure the performance of your the activities right, whatever that you do on the Google ad, maybe on the Google on your website my dear friends, whichever the activities, whatever thing that is really relevant with your website my dear friend to bring more traffic, to develop your website or to get more traffic and to get monetize your website my dear friend. So all that thing that actually my dear friend, all that topics if you want to really just wanted to study, so all that thing my dear friend that is actually available here, so you can just visit this, you can learn more here. Just here already they have given actually, see this all of your collection report again organized in one place where you can customize them and create more collection and allow administration to customize the presentation of your report in the left navigation. Great. So now just see here, create your new collection, then according to that just go with your life cycle, acquisition, engagement, monetize, retention, what exactly you want, edit collection, then user wise, demographic wise, technical wise, or as I told you my friend that create a new report. So in report what exactly you want, the acquisitor you want, user, traffic, engagement, so according to your which my friend you want conversion, page screens, so that you can select and you can just go with that. So my dear friends, this will wherever you can create a new report, what report exactly you are expecting for on the performance, what performance you just wanted to measure. आप अपनी वेबसाइट के रिलेटेड आप कौन से इनफैक्ट रिपोर्ट आप जस्ट चाहते हो, तो दैट यू कैन सिलेक्ट हियर राइट। आप यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद दैट यू कैन एक्सपेक्ट राइट, और ये रिपोर्ट डायरेक्टली दैट यू कैन डाउनलोड लेटर ऑन टू डायरेक्टली टू योर सिस्टम डियर। सो दैट विल एक्चुअली हेल्प यू राइट, ये आपको हेल्प करेगा कि हाउ टू परफॉर्म, हाउ टू प्लान फर्दर टू डेवलप what kind of blog that really the people they love. It was actually all about the analytics my dear friends, jahan par that is actually giving you idea about not only about the users, that also give you idea about the market, that also give you idea about right the version, technicals, demographic, people, what audience that to get, what exactly user from which city, from which country exactly right, for which age. So all that analytics my dear friend that you can expect easily right, if you are a business owner, you have a website. So now on what performance, whatever about the performance, whatever the activities is going on, what blog actually कौन सी blog ज़्यादा से ज़्यादा इनफैक्ट it is सबसे ज़्यादा इनफैक्ट रैंकिंग कर रही है. So all that report if you want my friend, so that to all that report you can expect it. Already we have plugin right, this already tool my friend, that is third party tool right, that already we have plugin. So now you can expect over there also, but on Google Analytics personally if you want, so already you are signed up my friends, so here also you can expect. So how you can do that, how you can expect that all the reports, so that already I told you my friend. So this is actually all about my friends and Google Analytics, and definitely my friend that will actually help you to measure the performance, whatever activity that they take care of right, whatever activity that they can take care right or taken care of on your website, so that all performance that you can measure with the help of Google Analytics. So this is all about my friend today's video. So I'm sure my friend that you have I'm sure my friend that you have understood right. So just keep practicing my friend, just go through it, visit once at least on your Google Analytics. In fact, if you don't have a website, then to my friend I want you to visit once and just study, go through and just study
it that how really it practically that it works. And once you just started working on preparing your website, then later on you can just start on that what kind of report that to expect and what parameter that to set, right? So to measure what kind of performance, what kind of exactly report that to expect. So on that parameters you can work out on your website, and you can start building that parameters with the help of that keyword that we already had a word. So that kind of page that you can expect. And because after all, you whatever parameter that you set on your website video, but after all that will work when audience will come on your website here. And regarding the visits and regarding the performance, regarding the time they spent on the website, all that thing, right, my friend, that you just want that report, right? And how what actually they have done, whether they have purchased the product and services or not, whether they have ordered something or not, or whether just going through only window shopping, what product exactly they liked, so on which page actually most of the time the people have spent the time. So all details, my friend, that you get on the Google Analytics. So yes, this was all about my friend the Google Analytics. So yes, यहाँ पर ही my friend that I just finished my workshop here. And regarding digital marketing, now I just would like to give you a few ideas, my friend. Now just I first suggestion that I would give you, my friend, that start working on, just start practicing on digital marketing, and start working at least start spending at least 2 to 3 hours in a day now, right? And let's start building your own website that actually available at the free of course, because the digital marketing that begins with what begins from you're having that begins with your personal website, right? Once we'll have a website, and in that website I want you to mention, right, I just want you to mention all the product that you're just selling on behalf of the company, right? So that only which is called what affiliate, right? So you can just mention all the affiliate product and services on your website, and start selling, start giving discounts or bonuses, lots of things that you can mention on your website, my friends. And try to insist the people to come on your website, because on website, I'm sure I'm not telling just to mention only single affiliate product to sell, but I want you, my friends, to set the direction, set the product in totally column wise, in which category exactly you're working, in which niche you are working, if for which company, for which brand exactly you're selling the product, because I want all that affiliate link, my friend, on your website. So when you're targeting the people with the help of launching your all the ads on social media platform, digital platform, so when you will start that thing, my friend, so easily you can redirect them, because there, my friend, you're just going to share your link over there, right? So that link can directly redirect them to bring them all to your website only. And in website, when they come, when they see the same product, when they get the same bonuses or discount that you have offered on SMM, that is SEO, or maybe SMM, right? Search engine optimization, or maybe social media marketing, whatever that you have shown, right? Lead magnet that we call. So that all must be seen here, right? Or sorry, offers and bonuses that should be shown on your website as well. So that definitely that will actually help you to convert your target or your lead into the business, damn sure, my friends. So digital marketing, my friend, that what exactly that you need is, let me tell you now you need a marketing techniques, right? Now you'll have to come out of now your comfort, dear. So now you'll have to start searching the company on web. We have a number of things that is just like a Just Dial, Yellow Pages, number of search engine that we have, right? So on that, my dear friends, now I want you to find small scale industries, because you can start your business with a small scale industry, and let's targeting the new upcoming newcomers or a new launching company, dear. So that will the help of that this movement in the beginning you can start on commission basis, right? At least for 3 to 5 companies. Later on you can, once you learn about how your digital marketing, how can you rank yourself, right, in performing digital marketing, how can you rank yourself in bringing more and more leads for your clients. So right, once you just feel like कि नहीं, अब मैंने बहुत सारे लोगों को इनफैक्ट लाते जा रहा हूँ, कन्वर्शन रेशो ऑल्सो गेट दैट इनफैक्ट ज़्यादा बढ़ते जा रहा है कन्वर्शन रेट, राइट, या फिर लीड इनफैक्ट जस्ट बढ़ती जा रही है, दैन माय फ्रेंड इन द नेक्स्ट स्टेज आई वुड सजेस्ट यू के directly without wasting your time, now let's have your own visiting card and let's start meeting the companies
online or maybe offline that you can target and start working on the project, maybe on SEO, maybe on SMM or entire digital marketing, right, that you can target there. So this is all about, my friend, there's nothing with the steps that how can you start your digital marketing, or how can you be expert into the digital marketing, how can you be a digital marketer. So by sitting at home even you can work, my friend, but in the beginning phase you'll have to work on the commission, you'll have to work like you'll have to work so hard. This is nothing but the reason why I'm just telling you all in all my videos that please keep practicing, keep practicing, keep practicing, because practice will only make you more perfect, my friend, in your industry, in your stream, my friend, because you are into digital marketing. And I'm sure agar aap digital marketing ke course if you have attended, so with the intention of earning something from your home, right, and you just wanted to build you another source of income, right? So already now you are now you learned about, right, how digital marketing that going to work, right, how it really works, how to function. So how now I'm sure now you'll have idea now how can you plan to raise or to grow the another source of income for you, dear. So how you're going to plan the company, right, how you're going to work for them all, what exactly the pamphlet proposal, how can you prepare for yourself, what exactly you're just going to do for them all. So all that thing, my friend, just you just will have to talk on our emails, and how can we start all that thing. So now I'm sure now you become a consultant, my friend, now you are the what, yeah, now you become expert. Once you become expert, my friend, then directly you'll be you'll be a consultant, my friend, business consultant, because now you know each and everything about how to bring more lead for your business or for your client business. So yes, my friend, that is actually all about that. So in digital marketing, exactly, we work just only for to bring exactly more and more business leads and to convert them and to get monetized. So this is nothing but a digital marketing what we exactly we have done. So wish you all the best, my dear fans. Thanks a lot, you, my dear friend, for your love and for your really the great interest that you just shown, my dear friend, on our workshop. And I hope, my dear friend, that workshop, it has changed the life of many people, and it will really going to change the life of many people, my dear friend, if you really focus, if you really understand, right. So that will actually going to change your life, and that's for sure, my dear fans. So wish you all the best. Thanks for being with me here. Thanks for being with me for entire course, my dear friend, and thanks a lot for you, my dear friends, for being a really part of our this workshop. So wish you all the best. Keep in touch. Thank you.